जान्हवी सावंत. आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि अनेकांच्या जीवनाशी निगडित विषयावर चर्चा करणार आहोत. प्रगत सांधे प्रत्यारोपण उपचार सेवा. आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे आज हिप आणि गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया अधिक सुरक्षित, अचूक आणि जलद पुनर्वसन देणाऱ्या ठरत आहेत. या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्या सोबत उपस्थित आहेत प्रख्यात अस्थिरोग तज्ञ डॉक्टर सुप्रीत बाजवा. सर, कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे. नमस्कार. तर विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी सरांचा थोडक्यात परिचय करून घेऊया. डॉक्टर सुप्रीत बाजवा हे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया येथे प्रशिक्षित असलेले अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन असून प्राथमिक तसेच रिव्हिजन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीमध्ये त्यांना विशेष प्रावीण्य आहे. 8 वर्षाहून अधिक अनुभवासह त्यांनी 2000हून अधिक यशस्वी हिप आणि गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत. सध्या ते मुंबई सेंट्रल येथील वोकार्ड हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट हिप अँड नी सर्जन म्हणून कार्यरत असून रुग्णांना अत्याधुनिक आणि सर्वोत्तम दर्जाची उपचार सेवा देण्याचं कार्य करतात. डायरेक्ट एंटेरियर अप्रोच, हिप रिप्लेसमेंट, रोबोटिक डीए, टोटल हिप रिप्लेसमेंट तसेच रोबोटिक टोटल आणि पार्शल नी रिप्लेसमेंट या आधुनिक शस्त्रक्रियांमध्ये त्यांचं विशेष कौशल्य आहे. आणि वोकार्ड हॉस्पिटल बद्दल सांगायचं झाल्यास ही तर देशामधील अग्रगण्य सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल साखळींपैकी एक असून मुंबई, नागपूर आणि राजकोट येथे अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. रुग्णांची सुरक्षितता, जागतिक दर्जाची उपचार पद्धती आणि उच्च गुणवत्तेची आरोग्य सेवा हे या हॉस्पिटलचं प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. 1500 पेक्षा अधिक बेड्सची सुविधा आणि 1000हून अधिक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्सद्वारे रुग्णसेवेतील गुणवत्ता सातत्याने जपली जाते. तर चला आज डॉक्टर सुप्रीत बाजवा यांच्याकडून जाणून घेऊयात प्रगत सांधे प्रत्यारोपण उपचार सेवा नेमकी काय आहे. सर, आजकाल आपण बघतो की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीची गरज खूप वाढलेली आहे, असं का? लाईफ एक्सपेक्टेंसी जे आहे ते थोड़ी वाढलेली आहे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अलॉन्ग विद इट डे टू डे फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव तो कर रहे हैं, बट वेट गेन, डायबिटीज़, एज रिलेटेड आर्थराइटिस, नी और हिप के वेयर एंड टेयर पैटर्न जो हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं. Along with this, younger patients में भी hip arthritis because of AVN काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, and that is all leading to an increased incidence in hip and knee arthritis, along with the need for excess amount of surgical procedures for these conditions. अगदीच. पण डॉक्टर, कधी समजायचं मग की आता इंजेक्शन्स किंवा फिजिओथेरपी पुरेशी नाहीये तर आपल्याला रिप्लेसमेंट सर्जरी करायला लागणार आहे? जेव्हा आपला डे टू डे ॲक्टिव्हिटीजमध्ये इंटरफियरन्स शुरुआत झाला है, जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना, गाड़ी में बैठना, अपने टो नेल्स कट नहीं कर पाना, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ सच एज सिटिंग ऑन द फ्लोर, क्रॉस लेग सिटिंग, अगर ये पेशेंट्स की एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट होने लग जाए, दैट इज़ व्हेन सर्जिकल ओपिनियन लेने की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट्स वेयर यू शुड सी अ स्पेशलिस्ट टू मेक श्योर दैट यू डोंट सफ़र फ्रॉम हिप और नी रिलेटेड आर्थराइटिक रिलेटेड इश्यूज. सर, आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे, तो म्हणजे हिप रिप्लेसमेंट मध्ये जे डायरेक्ट एंटेरियर अप्रोच म्हणजे डीए ज्याला म्हणतात, ते म्हणजे नेमकं काय आहे आणि ट्रेडिशनल सर्जरीपेक्षा ते कसं वेगळं आहे? डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच एक फैसिनेटिंग न्यू सर्जिकल टेक्निक है जो इंडिया में पिछले कुछ सालों से ही आई हुई है. We were doing hip replacement surgeries using the traditional conventional methods जिसमें मसल यानी मांस कट किया जाता था, बट डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच मांडी के सामने से सर्जिकल टेक्निक है जिसमें मसल्स कट नहीं किए जाते. यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हम मसल्स को साइड में करते हैं और नेचुरल प्लेन्स को यूज़ करते हुए ही हिप के अंदर जाकर बॉल और सॉकेट जो हिप का खराब हुआ है उसको रिप्लेस कर देते हैं. दिस इन टर्न गिव्स फॅसिनेटिंग इनिशियल फंक्शनल रिकवरी, म्हणजे पेशंट्स आपला डे टू डे अफेअर्समध्ये व्हेरी क्विकली रिटर्न कर सकते हैं, and with limited amount of recovery period. So direct anterior approach is a muscle sparing, muscle ना कट करताना surgical approach, which is why it is different from the traditional method of doing hip replacement surgery. अगदीच. पण आता जसं तुम्ही म्हणालात की लवकर त्यांना प्रतिक्रिया मिळतात, पण तरी सुद्धा म्हणून विचारते की डीए मध्ये लवकर पेशंट चालू शकतो का आणि अर्थात रिकव्हरी जलद होते का? यस, डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच है हिप रिप्लेसमेंट सा सर्जिकल टेक्निक है जिसमें हम कोई मसल्स कट नहीं करते हैं. ये मसल्स नहीं कट करने का ही एक इनिशियल फंक्शनल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है. यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हम ये जो सर्जिकल टेक्निक यूज़ करते हैं विथ प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ इम्प्लांट्स, पेशेंट्स
जब भी एनेस्थीसिया से बाहर आते हैं, दैट इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, वो वॉकर के साथ फर्स्ट टाइम चलना चालू कर देते हैं जस्ट टू मेंटेन देयर बैलेंस। और एक बार उन्होंने अपना बैलेंस रीगेन कर लिया, वी टेक द वॉकर अवे, डिपेंडिंग ऑन एज, क्वालिटी ऑफ बोन्स, हम उनको उसी दिन या फिर नेक्स्ट दिन सीढ़ी चढ़ा देते हैं और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्लीपिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द बेड, स्लीपिंग ऑन देयर बेली, सब कुछ इनिशिएट कर देते हैं। The idea of doing the direct anterior approach to hip replacement is initially पेशेंट का फंक्शनल बाउंस बैक बहुत जल्दी होना चाहिए। एज सून एज दे कम बैक टू रियलिटी विद देयर मोबिलिटी, दे आर फार मोर कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ देयर पेन एंड रिहैबिलिटेशन बिकम्स ईजियर हमारे पेशेंट्स के लिए और हमारे लिए एज अ टीम टू गेट देम बैक ऑन ट्रॅक। निश्चितच। पण डॉक्टर, आणखी एक प्रश्न पेशंट्समध्ये आपल्याला जाणवतो, तो म्हणजे एकदा ऑपरेशन झालं, एकदा हिप रिप्लेसमेंट झालं की आपण पूर्ण आपलं उरलेलं जे आयुष्य आहे ते रेग्युलर करू शकतो का काही रिस्ट्रिक्शन्स पाळावे लागतात? Absolutely fair question to ask. प्रीवियसली कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सर्जिकल टेक्निक्स जब यूटिलाइज होती थी, उसमें हिप रिप्लेसमेंट के बाद हिप प्रिकॉशंस दिए जाते थे। इसका मतलब है कि पेशेंट्स ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, इंडियन कमोड यूज़ नहीं कर सकते, बाइक चलाने में रिस्ट्रिक्शंस होते थे, एंड मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स जो शेतकरी हैं उन्हें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जाने में रिस्ट्रिक्शंस मिलते थे। फॉर्चुनेटली विद डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच टू हिप रिप्लेसमेंट ये सारे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं करते। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी में हिप रिप्लेसमेंट बटक्स के पीछे की मसल्स कट करके होती थी। बिकॉज ये मसल्स फ्लिम्जी हैं, इनके सर्जिकली रिपेयर करने के बाद भी हीलिंग बहुत सारे केसेस में प्रिडिक्टेबल नहीं होती थी और इसीलिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते थे। बट डायरेक्ट एंटीरियर या DAA हिप रिप्लेसमेंट में ये मसल्स कट नहीं होती और थाई के सामने से सर्जरी करने का एडवांटेज वही है कि रिस्क ऑफ डिसलोकेशन बहुत कम हो जाता है। इसीलिए हमारे सारे पेशेंट्स रिस्ट्रिक्शन फ्री अपनी डे टू डे एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स सिटिंग ऑन द फ्लोर, डूइंग योर रूटीन जॉब, फार्मिंग, without any restrictions or without any time lags. अर्थात म्हणजे DAA मुळे नॉर्मल लाईफ आपण पुन्हा एकदा जगू शकतो अर्थात. Absolutely, yes. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस. तर हे तरुण लोकांमध्येच का दिसतं आणि त्यामध्ये हिप रिप्लेसमेंट कधी करायला लागतं? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज और एक बहुत नोटिसेबल चेंज इंडियन ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में आया है विद द एडवेंट ऑफ AVN। ऐसा नहीं है कि इंडिया में AVN पहले नहीं था। एवैस्कुलर नेक्रोसिस बहुत सालों से इंडिया और वेस्ट में एग्जिस्ट करता है, बट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स यंगर पेशेंट्स में ये इसीलिए भी हो रहा है बिकॉज कोविड और कोविड का जो fall around रहा है in managing COVID, which particularly includes the use of steroid, उसकी वजह से हिप बॉल में जो ब्लड सप्लाई होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये ब्लड सप्लाई जब रिस्ट्रिक्ट होता है, सो विद इंक्रीजिंग एक्टिविटी वो जो हिप का बॉल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसको प्रॉपर कैल्शियम डिपोजिशन नहीं मिलता, विच लीड्स टू द हिप बॉल गेटिंग आर्थराइटिक। कोविड स्टेरॉइड्स के साथ साथ बहुत सारे और छोटे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द हिप बॉल नॉट गेटिंग इट्स ब्लड सप्लाई, विच इंक्लूड्स इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, blood or bleeding disorders such as thalassemia या sickle cell disease, or abuse of a few substances which can lead to avascular necrosis. India में of late primarily because of steroid abuse and alcohol abuse ये incident काफ़ी बढ़ चुका है, but these factors and other factors have existed in the past as well. अगदीच. डॉक्टर, आजकाल आपण बघतोय की रोबोटिक सर्जरीचा वापर खूप जास्त व्हायला लागलेला आहे. तर हिप आणि नी रिप्लेसमेंट मध्ये रोबोटिक सर्जरीचा काय फायदा आहे? Robot is an excellent accuracy producing tool. Robot is a marvelous intervention जे आपल्याला regular life मध्ये ह्याला compare करायचं आहे, then that we can compare it with the GPS map. Basically it helps us to get to our destination in a more accurate manner. तो robot by itself is a CNC device. It's a machine which helps us implant good quality implants into our patients so that the implants last their longest life. So robotic surgery is an advantage that a lot of us have in India today with technology, and a lot of our younger patients
also our older patients are opting for robotic technique because implant accurately place अगर होगा तो वो ज़्यादा टाइम चलेगा. निश्चितच. डॉक्टर, तुम्ही म्हणालात की रोबोट तुम्हाला हेल्प करतो, तर बऱ्याच जणांच्या मनात हा प्रश्न येत असतो की एकतर रोबोटिक रिप्लेसमेंट सर्जरी म्हणजे काय आणि नेमकं रोबोट सर्जरी करतो की डॉक्टरच्या हातात सगळं असतं? This is a very common misconception because this also produces a little bit of fear. हमारे लाइफ में भी वो fear आ जाता है कि यार ये डॉक्टर सर्जरी नहीं कर रहे और रोबोट अगर सर्जरी कर रहे हैं, where is the control and what if robot malfunction कर जाए तो. But we have to understand that the robot is an extension to the doctor and the surgeon. Robot को हम inputs देते हैं before the surgery, and that is the biggest advantage of having a robotic platform, that even before हम surgery के अंदर घुसे उससे पहले ही हमको implant related और patient की bone quality related काफ़ी information मिल जाती है जो हमारी surgical planning को improve कर लेती है. Once we get into the surgical theater, there are 2 or 3 kinds of robotic platforms जिसमें robot असिस्ट करता है सर्जरी परफॉर्म करने को. तो सर्जन अपना काम करते हैं, अपना डेटा जो पहले कलेक्ट किया हुआ है यूजिंग सीटी स्कैन्स को सर्जरी के लिए वैलिडेट करते हैं, एंड वंस सर्जिकल टाइम में ये वैलिडेट हुआ, हमने कंफर्म कर दिया यूजिंग द रोबोट दैट दिस इज द राइट नी एंड दिस इज द इम्प्लांट दैट वी आर एमिंग फॉर. द रोबोट हेल्प्स अस इन मेकिंग cuts on the surface of the bone. Once those cuts are made, the surgeon again takes over the responsibility of performing the surgery and places the implant in the knee or the hip. ये implantation करने के बाद skin का closure, washing, dressing, ये सब surgical एक plan का एक pathway होता है which is done by the surgeon. So remember that the surgeon is always in control. The surgeon is doing the surgery. Robot is guiding him do the surgery as accurately as possible. अगदीच. म्हणजे सर, हिप रिप्लेसमेंट नंतर पेशंट लवकर चालू शकतो का? Traditional आणि direct anterior approach hip replacements recovery timelines are a little different. Traditional hip replacement चा नंतर आपण पेशंट्सला सेम दिवस किंवा नेक्स्ट डे चालायचं असिस्ट करतो. बट डिरेक्ट अँटिरियर अप्रोच हिप रिप्लेसमेंट में पेशंट्स इमिडिएटली आफ्टर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया जब खत्म होता है त्यांना आपण वॉकर किंवा फर्स्ट टाइम वॉकर यूज करून नेक्स्ट टाइम पासून विदाउट वॉकर अलाउ करतो अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम करने के लिए. नाउ विद रिकवरी टाइमलाइंस अदरवाइज पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन हिप रिप्लेसमेंट में होती है कि मुझे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज as quickly as possible करनी है. And with the use of the direct anterior approach surgical technique, these patients can go back home and do their day-to-day activities, including work resumption within the first couple of weeks. Most of our young patients जे आहे त्यांना आपण जिम, सायकलिंग, रोईंग हे सगळं ॲक्टिव्हिटीज 2 to 3 weeks में ही अलाउ कर देते हैं आणि 6 आठवड्यानंतर these patients can bounce back to high impact activities as well, provided that the implants are of the highest quality and the surgical technique used assures that these implants are placed in the right placement. पण डॉक्टर, बघतो आपण की जेव्हा हिप रिप्लेसमेंट असावी किंवा नी रिप्लेसमेंट ही जनरली आपल्याला माहिती आहे की वयस्कर लोकांमध्ये असते किंवा एक 60-65 वर्ष झाल्यानंतर, पण तरुणांना सुद्धा याची गरज पडते का आणि केलं जातं का मुळात? येस, मोर सो हिप रिप्लेसमेंट मध्ये हे यंगर पेशंट्स खूपच अफेक्ट होतात बिकॉज हिप आर्थरायटिस ड्यू टू एव्हीएन खूप जास्त आहे इन यंगर पेशंट्स. नी रिप्लेसमेंट पेशंट्स आर जनरली द वन्स हू सफर बिकॉज ऑफ डे टू डे वेअर अँड टेअर. सवय एक असते इंडियामध्ये लोकांना खाली बसायचं सवय खूप आहे, मांडी घालून बसायचं सवय खूप आहे. दीज आर द प्रॉब्लेम्स दॅट over a period of years increase in intensity along with dietary insufficiency, weight gain, sedentary lifestyle. हे सगळं older patients मध्ये kneeचा issues produce करतात. But hip is also seen, hip problems are also seen in younger patients and quite frequently now over the past 3-4 years, potentially due to the bounce back effect of COVID. डॉक्टर, सर्जरी म्हटलं की कोणालाही भीती वाटतेच आणि त्यात जर हे इम्प्लांट जे आहे आपण ते महत्वाचं म्हणजे किती वर्ष टिकतं का पुन्हा रिपीट सर्जरीची गरज भासते? इम्प्लांट
लाइफस्पॅन डिपेंड करता है इम्प्लांटचा क्वालिटीवर. सो इफ वी यूज द हायेस्ट क्वालिटी ऑफ implants both for the hip and knee, patients recover quickly, but the implants are expected to last between 20 to 40 years, which for a lot of patients is almost the rest of their life. So important आणि महत्त्वाचं गोष्ट हे आहे that good quality implants using the good surgical technique in good surgical hands in a good institute, when done well in a right patient, will produce excellent surgical outcomes which will potentially last a lifetime. पण सर्जरी केल्यानंतर एक भीती असते की आपण नॉर्मल लाईफ पुन्हा जगू शकतो का? जसं तुम्ही म्हणालात की डीए झाल्यानंतर नॉर्मल लाईफला तुम्ही येऊ शकता, तरी सुद्धा ती भीती कुठेतरी मनात असते, तर त्याविषयी काय सांगा? Absolutely. And this is completely natural. सगळ्या पेशंट्समध्ये हे भीती राहणारच that, this is a man-made surgical procedure. Should we expect normality? But modern implants, modern surgical technique, modern hospitals, modern equipments allow us for a really long time to get us the best surgical outcomes. Over the past 10-15 years, India is lucky to have the best quality implants both produced locally and from abroad, which are really applicable to a lot of our patients. So young or old, patients आपले lifestyle resume करू शकते and they can expect normality or at least near normality in majority of the cases. मग एवढे सगळे फायदे असताना पेशंट्स डिले का करतात ऑपरेशनसाठी आणि डिले केल्यामुळे काही नुकसान होतं का? Yes, so there's a lot of misconceptions आणि fear, भीती, जे एक word आहे that is very common amongst a lot of us. Fear of surgical failure, fear of bad surgical outcomes, fear of getting bedridden, also associated costs, that challenge in the recovery of the patient. These fears come about, both socially and emotionally to stop the patient from seeking treatment at the right time. अब मेरे सारे patients जो आते हैं वो at a delayed stage present भी करते हैं. That is also because surgery से लोगों को बहुत डर लगता है. But we also have to understand that every patient जो clinic में आता है is not a surgical candidate. Especially अगर आप अपने symptoms को recognize करो, आपकी limitations को at the right time, at an early stage recognize करो. So with medications, activity modifications, maybe even injections, हम surgical processes को push जरूर कर सकते हैं. It is that fear that one has to overcome, and slowly we are seeing that change and awareness in patients. Patients are becoming more aware and they are coming to us for more and more and opinions at the right time. डॉक्टर, रिप्लेसमेंट सर्जरी बद्दल बरेच मिथ असतात लोकांमध्ये. तुम्हाला काय काय ऐकायला मिळालं? कोणकोणते मिथ लोकांकडून ऐकायला मिळतात? Very common in our OPDs. Patients' first expectation, when we have an interaction is, क्या मैं bedridden हो जाऊंगा after the surgery? Generally, हे सगळ्यांना कळायला पाहिजे that this procedure is performed to improve the quality of life. So bedridden is not an option, right? So these patients, instead of being bedridden, will walk back into normality. This is the intention, this is the goal of recovery. So that is a very big myth that stops patients from coming to us at the right time. Other myth is the fact that we will not be able to resume normality in our life. Again, that's a misconception, because after both hip and knee replacement surgeries, patients come back into their routine day-to-day activities, and in most cases, especially for younger Tarun patients, these patients come back into their sporting activities as well within 1 to 1.5 months. Another myth is the fact that these implants don't last for a really long time. Good quality implants last a really long time, and your surgeon can really help you make that decision. But generally, anywhere between 20 to 40 years, and sometimes even longer. Other myth is about the robot, that the robot itself performs the surgery, which is a big myth. It is your surgeon, it is your surgeon's brain, it is your surgeon's navigation skills that improves the surgical outcomes. So robot is only a tool, so nothing to be scared of when you talk about these myths. ओके सर, वॉकआउट हॉस्पिटलमध्ये कोणकोणत्या आधुनिक सुविधा आणि तंत्रज्ञान आहेत? So
along with the fact that we have great infrastructure, Wokhard मध्ये एक बहुत latest robotic platform आया है for the past couple of years, which does fantastic work in helping us give the right outcomes. We also have a training and rehabilitation team. We have the best anesthetist team to make sure that our patients come back into their routine activities as soon as possible. So right surgeons, right surgical skill, right team, right rehabilitation, and hopefully with the right patient, we're able to give our patients the best outcome possible. अगदीच. त्यामुळे तुम्हालाही जर असा काही त्रास असेल तर वोकहार्ट हॉस्पिटलला आणि डॉक्टर सुप्रीत बाजवांना नक्कीच भेट द्या. डॉक्टर, तुम्ही इथे आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. Thank you so much for having me. Namaskar. तर आरोग्यम धनसंपदामध्ये आज आपण इथेच थांबतोय. पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह. तुम्ही कुठेही जाऊ नका. पाहत रहा TV9 मराठी.